So we are coming to this most enjoyable session, that is coloring with biochar. Why biochar should be used as one of the most important pigment everywhere for coloring? Because this is carbon negative. It also takes away emissions. Then it is lighter material. Okay. Color guarantee. The black is black. Black will be more black. है ना? हमारा डर है कि हम काला ना हो जाए, इसलिए टेंशन ज्यादा है. जब काले को अपनाते तो दुनिया में क्या प्रॉब्लम? If we think black is my color, black color, then there is no problem. है ना? So here one thing is, what we say, this is black body. Black body, you might have heard in the universal this thing, celestial objects and all that. There is something called black body, where you say all the matter will get absorbed. In Big Bang theory, if you say if there is some origin place, then there is another place called black hole, we say usually. Otherwise, the technical physics term is black body. Black body means it will absorb heat also, it will absorb light also. All the light it is absorbing, you see, VIBGYOR, all the wavelengths it is absorbing. If it has reflected any wavelength, it colors would have been that color. Are you getting? So here all the wavelengths are taken by it. Heat also it will take. But good thing of all black bodies is whatever is taken, it gives off again. Black body का nature ऐसा है, it takes, it gives. Whereas white body is, it never takes, it only reflects. Got the logic? So for all these values, I think biochar should be given top priority. Only some things like people will say, if things are black, if they absorb more heat, then we will have problem. Heat is one problem, they say, no? That is the thing, basic concern. So if your hair is black, then do you think it is absorbing more heat and your brain is getting heated more? Why? It is black, no? Black things will absorb more heat. Correct? Natural. If you put one white plate and black plate, you can check the temperature, which is hotter. Yeah, but actually the biochar is not a solid thing. It has porosity. That is the difference. Like your hair. Hair is not solid. In between hair there is gap. Air is bad conductor. So here also the porosity has air. So what is absorbed at the top is not transferred to the bottom. Second thing is, this is not metal. Metal objects will transfer heat directly. Okay, so these are the fundamental differences. So immediately on the surface layer it might be hotter, but just below it is not so hot, logically. Okay, agreed kada? Of course, all other values, as I said, they take in your emissions, or they purify, they sanctify. And black thing has one more thing, which it is said, I don't know exactly, but in Japanese and Chinese cultures, they say they emit far infrared radiation. What is far infrared? It is nothing but, if you go to hospital, if you have fallen down, they put a red color light at that spot. They generate some heat also. So then they say that cures you. In all physiotherapy it is common, that light. So that radiation biochar has the capacity, it seems. So that's why I say, if you are having BP and sugar, have your this bed with biochar. Then if it emits such radiation, then it should purify all your veins and everything, and you should have far better health. Agreed? So now we have a sense why we should use more biochar everywhere. Agreed? So paint is one fundamental, because most of the surfaces are painted. And nowadays, earlier there was only one paint. What is that paint? नहीं, वो paint नहीं बोल सकते. Gobar is like लेपना है. What was the paint or color we were using?
chuna. That is calcium carbonate. When it is heated, that stone is heated, CO2 goes out. Then we say quick lime, something like that. So even when you put in water, it becomes very hot. You might know younger generation, but we know when we were children, all houses were white only. There is only one color, white color. Or at the most peely mitti. Peely mitti means there was some yellow natural pigment, earth. वो पीली मिट्टी इसमें मिलाते और जिसका भी घर में शादी होता ना हर कोई वाइट कपड़ा ही पहन के घूमता क्यों चूना लग जाता बिकॉज वो इतना चूना डालते हैं कि वो शिट के भी कहीं भी देखो चूना लग गया ठीक है ना और उसमें हम क्या करते थे अपना ये गम डालते ये गम अरेबिक कुछ बोलते हैं इसको थॉर्नी प्लांट से आता है इसको बहुत कलेक्ट करते थे पहले भी अभी कम हुआ कितना केमिकल है कितना नेचुरल है पता नहीं अभी कैमलिन वाले तो बेचता है गुड एटलीस्ट रेडीली अपने को मिलता है नेचुरल प्रोडक्ट है तो ये ऐसा गम हम डालते थे वो प्लांट गम बोलते प्लांट गम डाल के चूना डालते देन इट वाज डूइंग सम गुड थिंग्स व्हाट इज गुड थिंग एनी इंसेक्ट्स और एनी माइक्रोब्स सभी को मार डालता है सैंक्टिफाइज ए हाउस दैट्स व्हाई यूजिंग लॉट्स ऑफ चूना now your Asian paint all that they emit emissions you are going to die मैं बोलना नहीं पता नहीं वो कंपनी वाला आके मेरे ऊपर केस भी डालता होगा आई डोंट नो लेट देम प्रूव दैट द emissions happening from your own traditional whitewashed house and the emissions that are happening with all these chemical paints which emission is better if they say that today the emissions are less than those emissions and those emissions are bad then I will agree otherwise we have to agree that whatever we are adding all the see these pigments are some metallic things are also there heavy metal contaminations are there any paint industry is a highly polluting industry agree then you have to agree that paints are bad then why you are having paints color paints why पागल बनने के लिए इफ यू सी व्हाइट देर इज पीस इफ यू सी रेड मर्डर करने का मन लगता नेचुरल है ना खून देखे तो आदमी क्या होता है एटलीस्ट इफ यू सी ग्रीन सम सूथिंग इफेक्ट विल बी देयर दैट्स व्हाई इन हॉस्पिटल्स वी यूज ग्रीन कलर but all the orange color we see so psychedelic colors so a person four walls four colors and within that room you are staying what you will become psycho so at least the black color is appreciated by some people कौन अप्लाई कर रहा आजकल ज्यादातर ब्लैक कलर ऐसा आई मैक्स ऐसा होता है ना वेर एवर यू हैव ए ईटरी प्लेस और समथिंग बिलो पार्किंग लॉट वेयर दे कीप एवरीथिंग ओपन your pipe system everything is open there they use black because when you throw light the black thing absorbs light so you can't see anything you might have got some experience when you are driving on a road they have laid freshly a road डांबर रोड you can't see anything तेरा लाइट जल रहा है नहीं जल रहा पता नहीं पूरा लाइट अब्सॉर्ब कर रहा है हुआ है आपको you have that experience sometimes It was too dark roads too dark now they are having reflective roads now oh cement road kuch aaya hai some chemical road now it is better otherwise too dark roads your light will not work so there they use when they keep all your when they are not doing false ceiling but all your lines are running there they put blank paint and they throw light from top to bottom there they are using complete black that's the only place I can say where they are using black colors otherwise you see everywhere we are using different colors so again now the time has come why we should use black of course the only challenge with black color is usually when you use white color the bounce light and other lights will have advantage in black environment whatever lights you are using if you don't have that bounciness then problem is everything is absorbed so कितना भी लाइट लगाओ आपको वो लाइट का ये नहीं मिलता that is the problem so maybe preferably what we can do is the reflective areas we can use white and other areas we can use dark agreed
in this pigment. I am telling plus minus of everything, especially the color between white and black. So another good thing is, okay, don't worry, if I say biochar is good, then this our calcium carbonate, that quicklime or whitewash, what we say generally, that is good. So good plus good is very good, बोल सकते हैं ना. तो वेरी गुड क्या करते, अभी इधर मिला है तो वेरी गुड हो रहा है. So in different proportions you can mix, so you can get different shades. हो गया ना. You can see the colors. Here you can see the colors. అంతే కదా. So this thing you can apply. At least people want to see gray is beautiful. For all studio effects, gray is very good. Why you like gray is, just before raining, all your clouds become so dark. At that you take any picture around, that looks beautiful. Agree? Before raining, पूरा वो क्या बोलते, डार्क क्लाउड्स आ जाते, वो टाइम वो बैकग्राउंड में फोटो लो, खुश है. इसलिए स्टूडियो वाले वो यूज करते ज्यादातर ग्रे. मैं भी वो यूज करता घर में. ठीक है. तो वो ग्रे इधर आ रहा है ना. So it has some reflective value, it has all the properties of your that absorption values भी है, and everything is there. So you can choose between the range. Got it? So perfect. So अभी इसको कितने तरीके से अप्लाई करना अपने को. First thing is, without painting, if I make bricks and I use the bricks as it is without plastering, that has more value. Agreed? Biochar bricks. Usually cement is grey color, grey plus black. It is not dark black. It is actually a kind of peacock black. Means it has radiance of peacock bluish and then black. So beautiful. I have my bricks. If I see those bricks, that's a particular. అక్కడ ఉన్నాయి మన bricks ఉన్నాయి. Maybe around 300-400 bricks I made. They are ready. I want to have a house. So what will happen is, if you live in that house, you will really feel like either you should live outside or you should live inside. There are only two things. So आदमी एक ही जीव है जो इनसाइड ज्यादा जीता है, आउटसाइड कम जीता है. Agreed? All other animal they live outside more and they live inside less. Agreed? So if you are inside, you are going to die faster. Agreed? Because indoor air pollution is more than outdoor air pollution. If I sleep on Panjagutta Chaurasta, I will live longer. But indoor air pollution, you are closing everything, door, window, everything. मच्छर आया बंद करो. एक मच्छर क्या करता है, आदमी को क्या करता है. अरे करेक्ट डायलॉग बोलते. मारते ना एक मच्छर को, कैसा मारते. हाँ. तो एक मच्छर के वास्ते अभी क्या हुआ, हमारा दरवाजा बंद हो गया, खिड़की बंद हो गया. उसमें और क्या लगाया हमने. वो जारी छोड़ो, क्या लगाए, एक लगा के सोते. क्या सोते. करेक्ट बोल रहा है. ऑल आउट, ऑल आउट, ऑल ऑल. बेचने वाला सही है, खरीदने वाले को समझदारी होना चाहिए. इफ यू डाई वन डे एंड पुट ए केस इन द कोर्ट ऑल्सो, यू विल से what is written there. और गुड नाइट का मतलब भी वही होता है. हाँ. अभी मैं ओम शांति वाला एक लाएगा तो दूसरा मैं RIP वाला भी एक बनाएगा अभी. ठीक है ना. आपको ये भी ब्रांड चाहिए ना. आपको ओरिजिनल ब्रांड बोलते, इसको रियल ब्रांड बोलते, राइट ब्रांड बोलते. These are the only right brands. ठीक है, वो लगा देंगे हम. तो इसमें क्या हो रहा है. So that way, whatever we are using the arsenal chemicals for our sanctification, एक कछुआ चाप लगाए तो 50 सिगरेट बोलते. फिर एक अगरबत्ती लगाए तो भी वही है ना. लॉजिकली एक सिगरेट पीने वाला भी वही है ना. स्मोक ही स्मोक, तो मरने ही है अपने को. तो ऑल दिस थिंग्स टुगेदर, तो आप कुछ भी बोलो, बट दिस थिंग्स आर काजिंग योर दिस थिंग. तो समथिंग शुड बी अब्सॉर्बिंग. तो बायोचार ब्रिक्स में वो कैपेसिटी है. सो फर्स्ट प्रायोरिटी विल गिव टू बायोचार ब्रिक्स विदाउट, so that your emissions, everything is your negativities, है ना.
और वो बोलते हैं ना कि अपना नजर ना लगे, बुरा बुरा हवा ना लगे, उसको भूत प्रेत बोलते हैं हम। गाली सोकिंदी, गाली दलगिंदी, if it's say in local language we say such words। वो मंत्र बोल के नमक कप और तू बोल के ऐसा करते, ऐसा करते, आप भी करते होंगे। हाँ वही हर जगह हाँ, होता है। पूरा इंडिया में वही काम। पूरे इंडिया में होता है। हाँ तो कश्मीर से कहीं। हाँ तो ये तो हर एक जगह होता है। तो वो बुरा हवा ना लगे, वो नजर ना लगे, कौन खींचता है? ये खींचता है। काला टीका आप शनिदेव को आने भी जाते, शनिदेव का ने पूरा काला होता है। वो कपड़ा चढ़ाते वो काला है, जो तेल चढ़ाते वो काला है, जो भगवान है वो काला है। मतलब आपने बोला आपका शनि उतारने के लिए कौन सा चाहिए? शनि भगवान चाहिए। वो शनि भगवान कौन है? अपना कौन है? मिल गया ना आपका भगवान। तो भयाचार की, भयाचार की वेरी गुड। तो काला को ऐसा क्यों सोच रहे? आज से उल्टा सोचो ना, थोड़ा आज से उल्टा सोचो ना। ब्लैक इज ब्यूटीफुल, ब्लैक रेवोल्यूशन। There is one thing is dark is beautiful. There ब्लैक ब्यूटी है ना। कितने भी वो स्मॉल इज ब्यूटीफुल बोलते, हर कोई ब्यूटीफुल बोलते, हम बोलते ब्लैक इज ब्यूटीफुल बोलते है कि नहीं? और ब्लैक रेवोल्यूशन बोलते, ठीक है ना? नो प्रॉब्लम। ओके, तो अभी हम क्या करते? ठीक है, बायोचार ब्रिक का एक कहानी हो गया। दैट इज द बेस्ट वे, यू नीड नॉट पेंट। वंस यू आर डन बायोचार ब्रिक, दैट इज परमानेंट कलर, परमानेंट ब्लैक, परमानेंट अब्जॉर्प्शन, परमानेंट उसमें पोरोसिटी भी होगा, मॉइस्चर भी खींचेगा, सब कुछ खींचता रहेगा, एमिशंस भी खींचेगा, एंड यू विल बी हैप्पी, है ना? तो अभी दूसरा ये पिगमेंट को यूज करना है अलग अलग अपने को, ठीक है? अभी पेंट में करना है। पेंट में बोला ठीक है, इफ यू आर टू लुकिंग टू बैड अबाउट ब्लैक, ये दोनों का भी वैल्यू भी है। ये मिडिल वाला करो, थोड़ा सफेद सफेद बोले तो ये करो। अगर लाइट भी थोड़ा दिखना है, रिफ्लेक्शन, फिर भी थोड़ा परसेंटेज अपना है। अग्रीड ना? और सेकंड थिंग इज मिक्सिंग दीज थिंग्स, लाइक लिनसीड में मिक्स करते, ऑयल पेंटिंग टाइप करते हैं ना, ओरिजिनली लिनसीड बोलते हैं, उसमें मिक्स करके पेंटिंग करते, उसका लाइफ ज्यादा रहता बिना ब्रेकिंग। ऑयल उतना जल्दी एवोपरेट नहीं होता, ऑयल पेंटिंग में करते। तो वैसा भी एक तरीका है हमको। बोथ मटेरियल्स, बेस मटेरियल्स रहते विच आर नेचुरल ऑल्सो। जैसा मुझे ओकरा मीन्स आयरन ओर, आयरन ऑक्साइड, रेड कलर जाजू बोलते हैं हम तेलुगु में, इधर जाजू पट्टी, वो आयरन ऑक्साइड में मिले थे और कुछ कलर बनता, देन ब्लैक प्लस रेड, ब्राउनिश रेड, अच्छा चॉकलेट बनता, इधे ना? हाँ, ये जाजू, ठीक है? ओनली जाजा कलपले ब्लैक। ओके, तो इसको हम क्या करते, इसमें मिलाए थे, एक अच्छा कलर आता। यू लाइक दिस कलर, ठीक है ना? तो ये भी बना लो। तो आपके ऑप्शंस मिल गए। बाय मिक्सिंग इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, डिफरेंट शेड्स यू कैन गेट। तो ये ऑल दिस आर नेचुरल। अगर मैं जाके कोई केव में ऐसा स्टिक काट वो ये करे तो अभी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट उधर ही बैठेगा। सिर्फ मुझे पुराना कोयला लाना है, आज का कोयला नहीं। 5000 ईयर ओल्ड कोयला कहीं से उठाना है, चारकोल उठा के उससे मैं पेंट बनाए तो उन लोग बोलते दे नो ऑलरेडी कंप्यूटर्स यू सी, बोलेगा दे ऑलरेडी न्यू सैटेलाइट यू सी दे आर ड्रॉन, बोलेगा। क्योंकि रेडियो कार्बन डेटिंग में तो वही आएगा ना एज, मेरा एज थोड़ी आएगा चलता है, तो हम वो भी कर सकते। तो बट दिस थिंग यू कैन ब्रिंग इनटू योर लाइफ बोल के बोल रहा हूँ अभी भी, है ना? आपका डाइस, इफ यू कैन मेक विद द सेम पिगमेंट्स डाइस इन योर फैब्रिक्स, ओनली फिक्सर चाहिए उसको, है ना? सो दैट फिक्सिंग विल बी डिफरेंट थिंग्स, यू नो। वो डाल के फिक्सिंग करो, ये बिकॉज इज ए नेचुरल पिगमेंट दैट एड्स वैल्यू। इसमें थोड़ा वेजिटेटिव पिगमेंट भी डालो, वो डालो, ये डालो, यू कैन ब्रिंग लॉट्स ऑफ शेड्स, ठीक है ना? दैट एड्स लॉट्स ऑफ वैल्यू। जैसा मैं बेस्ट चीज है, मैं कटन कर फैब्रिक में इंस्टेड ऑफ पेंटिंग विद बायोचार। बायोचार माइक्रो होता है ना, नैनो, जैसे मेरा धागा बनता उसमें डाल देता हूँ तो धागे में एम्बेड हो जाते, उससे मैं कटन बनाता। उसका नाम लगाओ पोल्यूशन फ्री कटन। बाहर से हवा आया, खींच लिया,
अंदर का पुल खींच लिया, ओके। मिनिमम तो करते ना अभी पैसा। ऑल फैब्रिक्स ही कैन ऐड, वेदर इन ड्रेस और कर्चिप से लेके टिश्यू से लेके वॉट एवर यू थिंक यू कैन ऐड ऑन, इवन मैट्रेस से लेके। बहुत बुरा चीज तो यही है मेरे लिए जिंदगी में, बिकॉज दीस आर नॉट डाइंग, पीपल आर डाइंग, लेकिन ये मरता नहीं। बिकॉज लाइफ ऑफ ए मैट्रेस इज इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग, आई डोंट नो व्हाई दे डू लाइक दैट। कोई भी मैट्रेस का एज होना चाहिए। बच्चा बच्चा जो कुछ भी किया चरित्र इसी में है। अगर मैं आर्कियोलॉजी टाइप उसमें निकालता हूँ ना, मेरा छोटा बच्चा इधर किया, बड़ा बच्चा उधर किया बड़े बड़े होने के बाद में इसमें चरित्र रहता पूरा, है ना। सब कुछ है इसमें, कुछ कोई इसको धोता क्या कोई, इसमें डालो बेटर है, ठीक है। तो वेयर वी कैन ऐड ऑल दिस थिंग्स आई एम टेलिंग, either as a pigment or either a granules or something or in fabric, ठीक है ना। ये दिस ऑल्सो यू कैन ऐड, दैट ऑल्सो एड्स वैल्यू। अनदर थिंग इज द बेस्ट थिंग, लाइक आई वांट टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ दिस प्लाईवुड। बेस्ट थिंग इज कुछ नहीं करने का, पेट्रोल लाने का, पेंट करने का। पेट्रोल से थोड़ा दूर रहना, पेट्रोल कैचेस फायर वेरी फास्ट, वेपर से भी दूर से ऐसा डालने का, भग बोल के जलेगा, जल के काला होता, ये बायोचार बनता। इसका लाइफ ज्यादा है, इसका लाइफ नहीं है। आप पेंट भी करो उसका लाइफ कम है, एंड दैट गिव्स एमिशंस। whereas ये लेयर ऑफ वुड on the surface layer, if you have made into biochar or charcoal thin, termite नहीं पकड़ेगा, कोई कीड़ा नहीं पकड़ेगा, and you need not put painting, varnish, वो पूरा फिर emission करता है। So that is the best painting. అది వేరే మేడం, ఇరగడం వేరే, ఓన్లీ సన్న लेयर చేస్తాం, ओनली टॉप लेयर ऑन द थिन लेयर, फिर उसको एक्सटिंग्विश करने का पानी डाल के, ओनली थिन लेयर। वो लाठी होता है ना, पुलिस का लाठी को भी चारिंग करते, वो काला रहता है ऐसा। केन, केन में भी ऐसा लकीर आती, इवन केन मेकर दे हीट इट, उनके पास एक रहता है स्पाइरल ब्लोअर, हाँ ब्लो टॉर्च रहता, उससे उसको हीट करते रहते, बेंड करते वक्त। दैट एड्स वैल्यू ऑफ इट्स प्रिजर्वेबिलिटी, अग्रीड। तो ये भी करो, ये भी एक पेंटिंग है। इवन इसका ऊपर मैं आर्ट करना है, देर इज वन पेंटिंग कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पेंटिंग, वो इट कम्स बाय नेचुरली। वो क्या करते हैं, जैसे एक मग है लकड़ी का, उसको इधर एक रखते हैं प्लस माइनस, इसमें जो मॉइस्चर होता है ना, वो मॉइस्चर से वो ऑटोमेटिक बर्निंग होता रहता है। जैसा आपका लाइटनिंग होता है ना, वैसा बर्न होते 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 ऐसा आ जाता पूरा पेंटिंग टाइप। वो कप को ऐसे बेच डालते, देट ऑल्सो सेम थिंग, यू आर ब्रिंगिंग वैल्यू देर, याद रखो। वो कप के लिए नेचुरल इट कम्स लाइक स्पार्क्स, आपको स्पार्क्स दिखते हैं ऐसा, हाई पावर एंड वाले प्लस माइनस लगा देते, उसको लगा के स्विच ऑन करते, ऑटोमेटिक ऐसा आ जाते, बिकॉज उसमें थोड़ा मॉइस्चर होता है ना। दैट्स ऑल्सो गुड थिंग। इसके अलावा मैं बोला कटलरी बनाओ, चम्मच बनाओ, बाउल बनाओ, कटलरी डायरेक्ट। वी आर टेलिंग हिम, अगर कोई पॉइजन डाल के खीर भी खिलाए ना, पॉइजन वो बोल खाएगा, तुम खीर खाएगा, फूड पॉइजनिंग। really important. रियली ऐसा एक्सपेरिमेंट मत करो, आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल, बट देर इज अ चांस दैट योर पॉइजन इज टेकन बाय द बोल एंड यू आर टेकन द खीर, ठीक है ना। ट्राई तो कर लो In the presence of the लेबोरेटरी में, नहीं वैसा नहीं, हाथ में करना, लेबोरेटरी टेस्ट करके कुछ करके कर लो, ऐसा मत करो, मैं मर जाएगा। हाँ, ये तो नया तरीका हो जाएगा। Not only that, inside of cars, instead of using so much of your plastics and materials, use the biochar based products. एक्चुअली हमारा ज़्यादा पोल्यूशन कार में होता है, क्योंकि इन आउट जो होता है ना हमारा, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, एक रूम में तो भी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का टाइम रहता है। वो एसी गाड़ी में क्या रहता, 10,000 liters in one day. If you're having a journey of about 200 kilometers, 300 kilometers with closed car door and AC, within no time all your air is contaminated. एक तो ड्राइवर होगा, अपन बैठे 4 लोग बैठे, 10,000 लीटर एक दिन बोले तो 10 मिनट में हमारा इन आउट करके पूरा भर देते, उसको कौन खींचेगा।
तो यूज इन योर ऑल, इवन ड्राइवर का सीट होता है ना, सीट का कुशन होता है ना, उसमें बायोचार अच्छा डालो। अपना सीट में भी वो कुशंस डालो स्पेशल, ताकि अपना एमिशन होता है, मतलब ये अलग अलग का स्वेटिंग होता है, बहुत कुछ होता है, तो वो पूरा खींचे। और इवन एयर प्यूरिफायर बोल के बना सकते, कोई भी ऐसा आप ले लो, इसमें बायोचार भर दो, इसमें कंप्यूटर फैन लगा दो, डीसी वाला उसको लगा दो, ये ऐसा होल्स कर दो, हवा करता रहेगा और फ्रेश एयर होता रहेगा। इट विल सक इन द एयर इनसाइड द व्हीकल एंड थ्रो द बायोचार, इट इज थ्रोइंग आउट, कर सकते ना। और ये अपना डीसी को क्या बोलते, चार्जर, कार चार्जर का सॉकेट पे रख दो ये फैन को, डीसी फैन, साइलेंट फैन, कंप्यूटर फैन रख सकते ना, हो गया ना। ये है अपना एयर प्यूरिफायर। व्हाट यू बाई इज व्हाट, एयर प्यूरिफायर और व्हाट आर यू बाइंग, pollution adder, because your pollution is already there, it is adding its pollution। वो कंपनी का, वो गोदरेज का पोल्यूशन ऐड करेगा, जो खरीदते वो पोल्यूशन ऐड करता है ना। हम अच्छे बोले तो क्या करते, आई एम ए गुड मैन, व्हाट डू यू डू, परफ्यूम मारते। लुकिंग गुड के लिए परफ्यूम मारते कि नहीं आप, मतलब वो आदमी उतना गंदा है इसलिए मारते हैं। हर कोई माँ को बेटी का, बच्चे का स्मेल अच्छा लगता है, बच्चे को माँ का स्मेल अच्छा लगता है, ये दुनिया है। लेकिन आदमी का स्मेल आदमी को अच्छा नहीं लगता है, ये कौन सा आदमी है, ये मुर्दा है। तो फॉर दोस emissions within vehicle also you have lots of options where you can reduce, ये बोल रहा हूँ मैं, करेक्ट है ना। that is the best place I am telling, otherwise I don't tell so much about vehicle because it's a congested area। फ्लाइट में तो यूज करते उन लोग, नहीं तो इतना लोग नहीं जाते, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट, 12 घंटे का फ्लाइट में बैठे तो हर कोई बेहोश होना चाहिए। उधर ही कार है, उधर ही टॉयलेट है, नीचे 2 डेड बॉडी भी है। डेड बॉडी आते जाते ना, क्योंकि अपन कहीं भी गए 1-2 डेड बॉडी आते रहते लगेज में। ఫ్లైట్స్ में हाँ ఏది మేడం బొగ్గా, దానికి పెద్ద పెద్ద పేర్లు పెట్టాలి మేడం, నానో కార్బన్ అనాలి, అట్లా మీరు బొగ్గు గిగ్గు అంటే డౌట్ వస్తుంది వాళ్ళకు, యూ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ గుడ్ నేమ్స్, యాక్టివేటెడ్ నానో కార్బన్ ఫర్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఏదో అనాలి, అట్లా అంటే దే విల్ నాట్ స్టాప్ యూ। इफ यू टेल इन नॉर्मल टर्म्स लाइक मी, हमारे घर में हम वो जला के राख बनाए, राख बना के हम लेके जा रहे अमेरिका, बोले तो बम बना रहे बोलते। रियली दे यूज चारकोल पाउडर इन बॉम्ब्स आल्सो, इन योर बैटरी आल्सो इट इज यूज्ड, रिमेम्बर बैटरी में यूज करते, याद है नॉर्मल बैटरीज। हाँ, बचपन में अपन थोड़े तो ये ग्रेफाइट बीच में आता, बाजू में वो आता है काला पाउडर आता है ना, तो ऐसा बहुत जगह अपने को है, अलग बात है। अभी इसको हम क्या करेंगे एज एन एक्सपेरिमेंट, इवन इफ यू वांट टू ऐड एज ए पेंट, इफ इट सरफेस इज एक्सपोज्ड इट विल हैव फॉर बेटर बोल के बोल रहा हूँ लॉजिकली। तो इसमें 2-3 है अपने को कलाकृति बनाने के लिए। एक है मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में ये पाउडर मिला के मोल्ड में डालता हूँ, एक्चुअली इट इज ब्रीथेबल, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ब्रीथेबल लॉजिकली, ठीक है ना। ये दोनों करके मैं डाले तो एटलीस्ट वो बुद्धा को एक जगह लगाया, गणेश को लगाया और कुछ बना के उधर लगाया, तो सम ब्रीथिंग इज हैपन। अनदर व्हाट आई डिड इज, इसको एपॉक्सी में डाल के वो बुद्धा को बनाया, गणेश जी को बनाया, ऐसा अलग अलग मूर्ति बनाया छोटा छोटा। उधर एक है कि देयर इट इज सीक्वेस्ट्रिंग द कार्बन, एक ही रोल कर रहा है, दैट्स ऑल, बट देयर इज नो ब्रीथिंग स्पेस because epoxy resin is itself is very hard, but it has produced a lighter product and has sequestered carbon for 100 years पक्का, क्योंकि वो epoxy भी अच्छा रहता, उतना easily damage नहीं होता, वो resin जो है ना it's very tough, so that way I have created a product for years together। if I have created a product only with gypsum or something plaster of Paris, कोई बच्चा गिरा दिया तो टूट गया, लेकिन उसका भी वैल्यू है, बिकॉज इफ इट रीचेस एज ए प्रोडक्ट इनटू द लैंडफिल इट हैज इट्स वैल्यू, ठीक है ना। वैसा
तो दैट इज वन वे कलाकृति बनाने के लिए, और आप उसको किसी को देने के लिए गिफ्ट आइटम देना है, कार में लगाना है, घर में लगाना है, ठीक है ना। तो ऑल दिस वैल्यूज वी हैव, दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग इज अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक पेंटिंग बोले, दैट इज फंडामेंटल। अभी प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, आई एम कमिंग टू दिस पॉइंट प्रैक्टिकली। तो उसमें दो तरह का पेंटिंग सोचेंगे, एक है इसको कंप्लीटली मिलाना कोई बेस मटेरियल में, वो एक है। मैं और एक बोलता हूँ, आई पेंट विद दिस काइंड ऑफ गम और सम स्टिकी मटेरियल, उसका ऊपर ये पाउडर छिड़का, वो बोल में क्या करो, पानी डालो, पानी डाल के ये लंप को ऐसा बीच में लगाओ, फिर मैडम का जो स्टिक काट होता है ना, ऐसे ऐसे स्टिक लगाना, वो भी लगाओ, अच्छा इसके सपोर्ट में चलेगा। लगाने के बाद क्या करो, इसमें एक मनी प्लांट वाला डालो, नहीं तो ऑर्किड ऐसा मैडम बोलिए ऐसा डालो, क्योंकि ये बायोचार पीस और ये ऑर्किड्स का बहुत रिलेशन है। हाँ पकड़ता है, वो रूट उसमें जाता है, ऐसा पकड़ के ऐसा जाता है, पूरा अच्छा रिलेशन है। नॉर्थ ईस्ट में अब गए तो ऑर्किड्स अभी कभी लाए तो भी उसमें पत्थर और यही डालना है और कुछ नहीं डालना, फिर मॉइस्चर से चलता है। तो आप ऑर्किड्स भी डाल लो या मनी प्लांट भी डाल लो, ठीक है। ये ब्लैक एंड ग्रीन कितना अच्छा कॉन्ट्रास्ट है, ब्यूटीफुल हो गया। और ये दो और कोई स्टिक्स आर्ट फॉर्म के लिए, ठीक है ना। तो ब्राउन, ग्रीन, ब्लैक, परफेक्ट। ये थोड़ा नीचे पानी डालो, उसमें दो छोटा गप्पी फिश डालो, ताकि वो फिश भी घूमता रहेगा। व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू पुट वाटर, इफ यू डोंट फिश, योर मस्किटो लार्वा विल कम। कोई भी आदमी आप बोलेगा देखो मस्किटो लार्वा घूम रहा है, तुम क्या कर रहे हो, बोलते वो नहीं होना है ना। तो क्या करना है, उसमें फिश डालना है। मेंढक तो नहीं डाल सकते ना घर में, क्या क्या मैक बोलेगा, फिश डाले तो वो गपचुप अपना काम करता रहेगा, है ना। नहीं तो मैं अच्छा छोटा मेंढक डालता हूँ, आके मेरे ऊपर आके बैठेगा, नहीं तो ये हमारा बॉस के लिए बना रहे पहले से, और भी डेंजर है ना। तो ये करके आप उधर रखो। अभी कितना वैल्यूज आए देखो, एक वैल्यू है अपना बायोचार का, ऑल द वैल्यूज दैट यू आर थिंकिंग इज देयर, हो गया ना। फिर मॉइस्चर रिटेंशन होके प्लांट भी रूट्स ग्रो होते हैं उसके ऊपर, बिकॉज कैपिलरी एक्शन करता है, और मॉइस्चर खींच रहा है नीचे से, तो योर रूट हेयर्स विल कम, न्यू रूट्स विल कम। और मनी प्लांट भी पकड़ लिया तो उसको लिपट लिया, ठीक है ना, ब्यूटीफुल हो गया ना। और प्लांट भी अपना ऑक्सीजन दे रहा है, याद रखो। दिस इज नॉट योर कट फ्लावर बोके, बोके मरने के लिए देते, ये जीने के लिए दे रहे। और जब लाइफ देखते हैं ना, एक मच्छी देखे, एक पेड़ देखे और बायोचार देखे, वो उसका जिंदगी में बोर नहीं होते, है ना। वो ना बोले तो इसी में इंटीग्रेट करके एक फायर एलिमेंट करके एक लैंप का भी जगह दो, अगर कोई लगता है तो छोटा लैंप का, ठीक है ना। तो इट एड्स इवन मोर वाइब्रेंसी समटाइम्स, नॉट एवरीवेयर, क्योंकि लैंप हर जगह तो नहीं लगाते। तो फायर एलिमेंट हो गया, वाटर एलिमेंट हो गया, बायोचार एलिमेंट हो गया, देन लाइफ एलिमेंट हो गया, और अपना सब कुछ हो गया, ब्यूटीफुल गधा। इवन ऐसे ही अपन वो अमेजोन में ऐसा फ्रेम करके मॉडल्स करके बेच दिया तो भी चलता है। पीपल विल बाय, नो वन बुक इज कास्टिंग एनी हंड्रेड्स ऑफ रुपीज। ये चीप है अपने लिए बनाना, चीप है ना, ये करो, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन आई एम टेलिंग। अभी इसके अलावा अभी दो तरह के पेंट बोले, आप नजदीक आ जाओ। तो व्हाट वील डू इज वील यूज चार्ट पेपर, ठीक है। अपना अपना पहले आउटलाइन कर लो पेंसिल से, whatever you want to draw. First you to take only half of the chart, 50% चार्ट कर लो, 50% चार्ट कर लो, लो। नहीं तो टीम में काम करो, दो दो लोग बैठ जाओ, जिसको दोस्त आर वेरी न्यू एट। सर आपको कुछ नहीं है तो एक काम करो, हाथ में भर लो, थप्पा मारो, वो बेस्ट है। हाँ वो भी अच्छा है, वो फाइनल है जिंदगी में। मैं घोड़ा बनने गया, ये मैं वराव बन गया। चलता है, वराव भी अच्छा आदमी। वराव मतलब समझ से है ना, कांतारा।
वही बन गया, मैं क्या करूं। मैं होना बोल के नहीं बनाई, लेकिन अच्छा है ये भी, आई लाइक दिस। उतना तो सोच नहीं। All in the eyes of the interview. Copying. Sir was saying he started with the donkey, and then the pig. Is it now? What is that? नहीं रियली में घोड़ा सोच के उतरा था। अभी pig दिख रहा है वो। नहीं पिग्गी हो गया, मैं बोला था दैट आई व्हेन आई स्टार्टेड थोड़ा हाथ उधर इधर हो गया था। यूजुअली में कुत्ता बनाए तो फॉक्स दिखता है। That's close. क्योंकि क्लोज नहीं, मेरा घर का नाम भी फॉक्स है ना, वो नेचुरली वो फॉक्स ही दिखना चाहिए। तो फिर इसको नाके मैडम, मैं इसको ये भी दे रहा हूँ, घंटा भी दे रहा हूँ। चलता है, हर एक जानवर अच्छा जानवर है। एंड पिग इज वन थिंग विच బాలేదు నా పిగ్గునేమనంటే నా భయచారణ అన్నట్టే। ये डायलॉग बाగుందా? क्या बोलते हैं, मेरा पिग को कुछ बोले तो मेरा भयचार को बोले टाइप। क्योंकि दिस इज फर्स्ट क्रीचर विष्णु अवतार में, वरा भी वन ऑफ द फर्स्ट क्रीचर्स, नॉट फर्स्ट क्रीचर। मत्स्य अवतार, देन कुर्म अवतार, देन ही ट्रांसलेटेड टू लैंड। तो ओरिजिनली भगवान समुद्र का आदमी था, फिर लैंड का आदमी बन गया, ठीक है ना। दशावतार में आता है। मेरा ऑर्डरिंग जरा ठीक है, बन गया। अभी इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये कांतारा टाइप जंगल में घूमना है ना, స్విమ్మింగ్ करना है। పెట్టుకుంటారంట ఇది మనలు లోపట। क्या बुरा बात है, बहुत छोटा है। अरे कल से जोक ही तो चल रहा है अपना, अच्छा अपना क्लास ही जोक में चल रहा है, तो जोक चलता ही रहता है। सीरियस वाला क्लास में सीरियस रहते लोग। ये ज्यादा इतना कॉम्प्लीमेंट मत दे रही। She's very intriguing. It's You have already fallen. yeah, I get into my art. You're giving only one color. Sorry, say a bride. देखो आपने बोला कि आपको चाहते नहीं, इतना सुंदर आ रहा है आपका, तो आपको क्या हुआ? ये पूरा पहाड़ है, सीढ़ी है, समंदर है, यहाँ पे नाव घूमेगी फिर। और क्या चाहिए लाइफ में? Black sea है वो. और क्या चाहिए? ब्लैक एंड व्हाइट। Nice. आपने भयचार तिलक किसको भी लगाया? Very nice. Like a lotus fish pond. Left side of the brain. Color का ना? अच्छा If you want some अपना पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज में जल रहा है, तो हमारे वरा आके उसको बुझा रहा है। अरे वाह, भयचार के वास्ते वो बुझा रहा है, ठीक है ना। ये फ्लेम्स है। इन रियली भी वरा ने भू माता को बचाया था, तो अभी भी अपना भू माता को बचाने के लिए भयचार की वो रूप लेके अपना वरा आया। ये ग्लोबल वार्मिंग है, अपना पृथ्वी जल रहा है, अभी उठाने जा रहा है, वेरी गुड। ठीक है ना। मैं रिलेवेंट हो गया। I think it needs the horns. हाँ वो ठीक है, वो एक ही चीज है। अपने लोग मुझे बोल रहे थे, मैं वो एक ही चीज भूल गया। अभी हान कैसा डालूं, नहीं वो मतलब हाँ मैं बस I fix it. कब है? ठीक है ना। ఇగో చూడు कभी शायद పండి కాదు మేడం, వరా అవతారము భూమిని రక్షించడానికి। అందుకే మరి ఇగో అయిపోయింది నాది పెయింటింగ్, टैक्सी बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है ना। నేను స్టార్ట్ చేశాను ఏంది కాంపిటీషన్ లో తీసుకున్నాను ఎవరు నేను తీసుకుంటాం, మా దానికంటే బాగుంటే తీసుకుంటాం, లేకపోతే వదిలేం. डिनर करके जाओगे.
इससे बढ़िया 8 बजे तक ये आने को यू आर कमिंग बैक टुडे यस व्हाट टाइम 7:30 हाँ तो आप नहीं जा सकते आज वो भी बोल रहा था बंदा हाँ तो आप साथ में कर लेंगे अरे साइन वैसे नहीं होती है इसमें ना पता चलना I'll show them your art अभी पेंट का हुआ नहीं अभी चलो साइन కూడా అయిపోయింది అది क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग सब कुछ हो गया नेक्स्ट क्या है पेंट करना है चलो और एक पे शीट ये इसी को नहीं पेंट करना है नहीं नहीं दिस इज डिफरेंट वी आर नॉट इवन स्टार्टेड This is pen. By Charat. అది हमको चाटी हाँ ये देखो ठीक है इसमें ये इधर है ये इधर है ये इधर है ये इधर है ఇది ఫస్ట్ నాకు పెన్సిల్ కావాలి పెన్సిల్ లేదా ఆహా ఈ పెన్ పట్లేదు నాకు ఇది వద్దా సార్ ఈ పెన్సిల్ ఇదా అది కొంచెము రఫ్ గా పోతుంది ఫస్ట్ అవుట్ లైన్ వేసుకోవాలి కదా ఒకటి సరే నెక్స్ట్ థీమ్ ఏమి వెళ్ళరు నాయనా మీరు మీ దగ్గర ఉన్న Charminar Hyderabad and Shepherd Stories వెనకాల Shepherd Stories logo no breaks Stories logo one I'll send it on the group हेलो ब्रो ये उन्होंने अभी अभी that फोटो will be दिखाया contextual कैसा ఇక్కడ देखा పెట్టొచ్చు ఆడ ఏదో ఏవోతే ఏదో అయ్యింది ఇప్పుడు ఏదో వేయాలని ఆలోచిస్తే ఏదైతే లేదు ఆర్స వద్దు ఆల్రెడీ ఒక ఆర్స్ ఉంది గోడ మీద నల్ల ఆర్స్ ఉంది కదా వేయండి సార్ లేదంటే మన దాన్నే దీన్ని మీ డూడిల్ ట్రిబ్యూట్ ఫోన్ ఉంది ఏదేది నాది రన్నింగ్ లో ఉంది నేను ల్యాప్టాప్ లో పెట్టి ఇదే మనం కూర్చొని ఏది నువ్వు వేసేది కాంపిటీషన్ చెప్పండి సార్ ఏదో అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటారు దాన్ని గద్దనా ఇంకో పేజ్ గోవాలో టాటూ వేసుకున్నాడు ఇప్పుడు చెప్పు హైదరాబాద్ లోనే అన్ని ఉండంగా గోవా ఎందుకు పోయినావు అని మేడం అంటారు పబ్బులు టబ్బులు ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడి నుంచే కంట్రోల్ చేస్తున్నా Hmm, ప్రాపర్టీలో వెళ్తే ఓకే ఐ మెట్ అవర్ ఇన్ ది వన్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ ఓ మీరు వచ్చినారు కదా మీకు ఎలా తెలుసు మీ పేరు ఆల్రెడీ లిస్ట్ లో ఉంది అని సేవ్ చేసుకుంటారు కదా ఒరిజినల్ లోగోనా ఇల్లది సరే ఒకటి నేను షార్ప్ గేస్తాలే షెపర్డ్ని నేను మొన్న కాయన చూసిన చూడకుండా వేస్తా ఆయన షెపర్డ్ లాగా ఉన్నాడు రియల్ షెపర్డ్ ఒక ఆయన చూసిన డ్రాగన్ బేబీ గబ్బిలమా So how are we painting? Batman. It's a butterfly. yes thank you sir Or thank is you the hand black? no first one is right it's butterfly So gum with pigments, gum added. Next it will take a brush. They would have okay. Wait. More chat. No, where the gum, just with the gum and this. ఇందులో కొంచెం డైరెక్ట్ అయ్యి Don't be gum pay. Not yet. How are you going to skip it? So do one thing. Just gum sprinkle various shades. Or you can do something like this. Do that. With a pencil. And then put gum in various shades and various. నేను మేకంది ట్రై చేస్తున్నాను పంది అంటే పంది అవుతుంది నాకు తెలియదు గాలి తాత పంది ముందట ఇక్కడ షెపర్డ్ స్టోరీస్ అంటే పిగ్ స్టోరీస్ అన్నట్టు అవుతుంది మళ్ళీ నేను ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ షెపర్డ్ రాదే నాకు అది పోయింది నువ్వు అన్నందుకే పోయింది ఇంకో చాట్ అది పంది గాలి షెపర్డ్ గాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను ఇంకో చాట్ ఐ కాంట్ డూ ఐ హ్యావ్ టు That is very nice. Shepherd is very good. అందుకే ఇందాకనే క్లోజ్ చేస్తాను ఆ స్టోరీ అచ్చే వెనకకే అటువైపు ఏంటి సార్? వెనకకే వెనకాల వస్తుందా? Shepherd వెనకాల వస్తుంది. ఇతను ఫస్ట్ జరుగుతుంది Reference కావాలా? అది షేప్స్ మర్చిపోతాం బాడీ ఉంటాయి కదా షెపర్డ్స్ మార్ఫాలజీ మర్చిపోతే మనకు అది రావు ఇయర్స్ ఉన్నాయి కదా అబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాయి మాత్రం The various shades. Even this. ఇక్కడ దగ్గరనే ఎత్తుకుంటా ఇందాకనే నా స్టోరీ అబ్స్ట్రాక్ట్ అదే మరి దాని మార్ఫాలజీ తెలియకపోతే మనకు గడబడి అవుతుంది
అవి నాకు గమ్ము 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 బ్రష్. Done. ఓకే ఉందా ఆల్రెడీ? పౌడర్స్ కావాలి నాకు Yes, yes. మీరు reserve. అన్నీ ఒకసారి పౌడర్స్ లేడున్నాయి, ఎట్లా తీసుకోవాలి? ఇది కాదు నాకు, నాకు రెడ్ ఒకరే కావాలి, దాంతో స్టార్ట్ చేద్దాం. అది వేడంటే అన్నీ అంటుంది. లైట్ కావాలి, వాటర్ కావాలి. దీంట్లో యాడ్ చేయండి. ఉండాలి ఉండాలి, వేరే ప్రాబ్లం ఉంటుంది. నాకు డార్క్ది కావాలి, చాక్ పీస్ డార్క్ది కావాలి. This is the darkest. ఇది మన రికార్డింగ్లో రాదు, డార్కెస్ట్ కావాలి. ఇదా? ఇది దూరం పెట్టించి, ఇది కెమెరా దగ్గరికి ఎట్రా, ఇది ఒకటి. దాంట్లో సగం మీ ఇన్స్పిరేషన్, సగం తను పేరు రాస్తున్నారు. దీన్ని డ్యాబ్ ఆర్ట్ అంటారా ఏమంటారు ఇట్లా అంటే? డ్యాబ్ ఆర్టా, డ్యాబింగ్ ఆర్ట్ ఏమో అంతేనా? డ్యాబింగ్ ఆర్ట్ అవు మరి ఏంది సార్ కాసేపు ఉండండి సార్. సీవ్ దట్. సరిపోతుంది. చలో వాటర్ గమ్మది, గమ్మే ఓకే. చూసి ఏరోప్లేన్ చెప్తే మీరు ఏరోప్లేన్ చెప్పిన యువత గుర్తొస్తుంది సార్, మళ్ళీ దాని కిందికి వెళ్ళాలి. చూడకండి అదికైనా మంచిది. సార్ అదే చెప్పిన నేను సార్ అన్నా మీకు కదా, ఖచ్చితంగా వినిపించింది. మామూలుగా తెల్ల బట్టలు వేసుకుంటారు, అలా ఎందుకు నల్ల చేయాలని చూస్తున్నా. ఓకే, వాటర్ కావాలి. ఆ బట్టలు తీసుకో. అంత పెద్దది చిన్నది చాయ్ తీసేది ఇదేనా? పిండి పిండి చాయ్ చాయ్ది చాయ్ది ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడే ఉందా? పిండిది కావాలండి. పిండిదే చెప్పు. ఊరికే అలా అలా దాంట్లో వేసుకొని అలా టచ్ చేయాలి. చలో మనము మాస్టర్ ఆర్టిస్ట్ల లెక్క పని చేయాలి. నాకు ఇన్ని రోజులకు అర్థమైంది నేను కూడా ఆర్టిస్ట్ అని. సార్ థింక్ ఐ మైట్ బి. ఏమో నాకు ఎవరు చెప్పలేదు నేను ఆర్టిస్ట్ అని, ఇట్లా అనిపిస్తుంది ఎందుకు ఆర్టిస్ట్ అని. అసలు బయచారు గీయచారు వదిలే దీనింటనే పడితే అయిపోతుందేమో. చూడండి నా స్టైల్ కొంచెం బాగుంది సార్. కాదు, ద వే ఐఎమ్ అప్లయింగ్. నా గొర్రెల ఇంటికెళ్ళి నల్లగా చేస్తున్నా. ఇలా గొర్రెలు. దిస్ ఇస్ మై బాగుందా? మీరు అనేది ఏంది, గొర్రెలు ఎట్లున్నా సరే చెప్పడు బాగుండాలంటారా? గొర్రెలు కనిపించలేదు సార్ నాకు. ఇప్పుడు కనబడితే ద మ్యాజిక్ ఈజ్ కనబడాయా? నా గొర్రెలు వచ్చినాయి. dogs వచ్చాయి. ఈ ఆటల బ్లోయింగ్ ఉంటుంది, టచింగ్ ఉంటుంది, పెయింటింగ్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఉంటాయని నాకు తెలియదు. బట్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. ఠీకేనా? ఇంకో నెక్స్ట్ కలర్ ఏది షేడ్ డార్క్ కాకుండా? నెక్స్ట్ కలర్ ఏది డార్క్ కాకుండా ఏ కలర్ ఉంటే షేడ్? అక్కడ ఇంకో దగ్గర ఉంది. No, you are. యూఆర్ కోడ్ ఇంకా 5-6 years నువ్వు బాగానే వేస్తున్నావు అమ్మా. భూమిని రక్షించడానికి మళ్ళీ వరాహం రావాల్సి వచ్చింది అనేది పాయింట్ ఆడ. మరి ఒకప్పుడు భూమాతను భూలక్ష్మిని రక్షించడానికి వరాహం వచ్చింది. సో ఇప్పుడు పూజలు చేస్తున్నారు కానీ నవరాత్రి 9 రోజులు New talent you have. ఏ అగ్రికల్చర్ వాళ్ళు ఆర్టిస్టులు ఎక్కువ ఉంటారు నేచురల్ గా. ఆల్ సైన్స్ పీపుల్ మినిమం మాట. I started to check it. I don't know where I ended. Yeah, modern knowledge. Very, very important. Hey, where is the gum? ఇలా చిన్న Don't put the Chai. ఆలోచించడానికి ఐ విల్ యూస్ సమ్ టీ ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్. ఇందులో సార్ అట్లా కాళ్ళకు
స్కిన్ కలర్ ఫేస్ కలర్ కూడా అంతే కదా మేడం. కొత్త బ్రష్ చేయండి, మళ్ళీ చాయ్ నేను తాగాలి, నా చాయ్ నేనే తాగాలి. కొత్త బ్రషా? కొత్తదే సార్ నేను వాడలేదు. ఎందుకంటే చాయ్లో ముంచనీకే. చలో, ఐ విల్ సీ హౌ స్ట్రాంగ్ ఈజ్ యువర్ టీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ కలర్ దెన్ మై పర్సన్ విల్ బి వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇలాంటి ఆర్టిస్టులు ఏడా కనబడరేమో దునియాలో. చాయ్ కూడా వేస్తున్నాం మేడం. बनाने भी अच्छा बना, बढ़िया। सर मैंने भी कुछ बना आपने भी बनाया है, ये भी अच्छा है, नीचे वाला कलाकार है ये भी। हाँ सब चित्रकार, चित्र आप एमएम से क्वेश्चन करके मिले हाँ, वो तो है ना, तो देखो। थोड़ा सा लेट रियलाइज हुआ। देखो कितना मस्त बड़ा है। अरे ये हाँ? చాయ్ కావాలనా? అందరూ పెయింట్ కావాలన్నా అది కావాలంటే మేము చాయ్ కావాలంటాం. వేసుకోండి. ये भी एक टेक्निक है. టీ కలర్ और this టీ is also green. ठीक है. ఏంటిది ఇది? గమ్ ఏది? గమ్ గమ్ గమ్. నేను ఆన్లైన్ ఆర్డర్ చేశాను. ఏమైనా యుద్ధం అవుతుందా ఇమీడియట్ గా? ఏరోప్లేన్లు అంతగానే తిరుగుతున్నాయి. షోనా? ఓడరు అంత ఇదిగా లేదు. కరెక్టే కానీ అయిపోయింది లేదు, పట్టుకుంటుంది గమ్ము, పట్టుకుంటుంది. మెల్లగా దీన్ని జరపాలి మనం. ఒక్క సెకండ్. ये शो नहीं मिला। लोटस सिल्वर వచ్చింది కదా. ఒక్క నిమిషం. इसको आठ गो ఉంటుంది ఉండండి. सर बहुत बढ़िया बनाया। ఎందుకు అంటున్నావా? सर ने बनाया इसलिए वो अच्छा है, दादी। ऐसे नहीं सर। అట్లా వద్దు, అంటుతుంది అది. వద్దు వద్దు, అది వస్తుంది, మనం కొట్టడమే కరెక్ట్. अभी इसमें यस ओरिजिनल पेंसिल। వాటర్ పట్టలేదు దాని లోపల ఒక చిన్న బల్బ్ టైప్ सर ग्रुप में डालने में आपका कहीं भी छोटा बहुत कुछ जानकारी लेनी हो तो आप नहीं, वो मुश्किल होता है. व्हाट्सएप ग्रुप, कॉमन ग्रुप एक ही करेक्ट है. हाँ तो इसमें लिख के दे हाँ, क्योंकि सुबह से आप देख रहे ना, हाँ वो तो मैं देख लिया सर, इसलिए किसी का फोन नहीं उठा रहा, समझ गया सर। तो ये हरदम प्रॉब्लम होता. आप एक कॉमन ग्रुप बनाते थे हाँ जी, वो तो बना दिया। वो 3 महीने तक रहता है एक्टिव. आप जो काम करते हो वही डालना. हाँ, नया चीज नहीं डालना. नहीं 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 आप सोच विचार करने, आप फील्ड में जो काम करते हो वही डालना. वही फिल्मने वाला काम ही है सर, इसके रिलेटेड बायोचार हाँ, बायोचार का जब आप फील्ड में काम कर रहे हो, फोटो डाल के पूछना है. ऐसा है, फोटो बिना डाले भी पूछना बोले तो आप सिर्फ सोच रहे हैं. सोचने से कुछ नहीं आता. एक सैंपल भी आप करते ना, तब उससे वैल्यू बनता है. ऐसा, तो वो चीज आप करो. ఓకే నా నా గొర్రెలు बहुत बढ़िया सर। ఆర్టిస్ట్ నేను కూడా ఏం చెప్పారు, ఆర్టిస్టులు కూడా చెప్పారు ఏం చేయాలి. అది కొంచెం జెలసీ వల్ల చెప్పట్లేదు యాక్చువల్లీ. ఉమ్, అవును మేడం. ఓ ఇంత సరిపోతా అనుకుంటా. థింక్ అभी इसको बॉर्डर बनाएंगे हम. बॉर्डर बॉर्डर सेम बना रहा हूँ. కంబడి ఎంత బాగా వేసినారు.